Sir, as the singer KK reportedly dies because of the heart attack, sir, what are the warning signs and what are the symptoms, preventive measures, and why this is happening? Again and again, so much cases of heart attack is increased in India itself. Yeah. So there are several answers to this. One is the fact that it is a known statistics that Indians have a higher percentage of people who will get heart disease, 2 to 3 times that of the Western world. So we have been trying to solve the puzzle, but there are several factors which you can identify. One, genetically, we know that genetically more people have coronary artery disease here. Second, our lifestyle is very sedentary, because in the old days, as you know, we had to do function on a normal basis, we would do exercise, but that's all because of automation has been reduced and people generally do not do exercise. So for that reason, the cardiovascular system does not get the necessary stimulation that it's supposed to get. Second, our diet is very rich in fried food. And also what is the most dangerous is that food that is refried in that oil in which it is refried, in the sense that you take a person who is making samosa. So today's oil will be used again tomorrow. So that actually creates atherogenosis from that oil. Okay. Third thing is that we have now in our life, there is a lot of stress. Everybody's under stress. Okay. Stress also contributes to high blood pressure, and also salt in the food also contributes to high blood pressure. The fourth thing is we do have a large proportion of our people who are smokers at a young age. So tobacco and chewing tobacco, they are both create the damage to the coronary arteries, on which then the fat deposits. So all these factors put together with high cholesterol, smoking, genetic history. So today we say, know your genes. Means that you should actually pay attention to your family history. If you have heart disease in your family, then the children will have double the risk. If you have diabetes in the family, then the children will have double the risk of developing diabetes. So if you know that, that means what it translates into is that you must be more careful. And what we suggest today is that by the age of 25, people who have positive family history should get their first checkup. And then we identify the risk factors and then guide them accordingly for the rest of their life. Similarly, people who do not have the history, they should get their first checkup by the age of 30, because there are problems that are existing which we don't know about. So if we know what our biochemical makeup is, our blood tests and all that will show that, it'll tell us whether we have a tendency for high blood pressure or not, diabetes or not. So all these things come out very clearly in a preventive checkup. And depending on what comes out, we will then prescribe how frequently those tests should be done. So today, what we are saying, people who have this propensity and on regular checkup, you discover that they are getting coronary artery disease, then 99% you can prevent death because of the fact that there is treatment available. So if treatment given in time, whether it is medicine, whether it is stenting, or whether it is bypass, your chances of survival become very high in the 90s. So that means that there is a lot of currency in getting a checkup. People think that I am healthy, so I feel good, so I don't need a checkup. But that is a false security, because what's happening inside you don't know till everything has been checked out. And we know. I'll give you an example. We have done thousands of executive checkups. People who come for a simple executive checkup, we discover that 26% of them have high blood pressure. More than 10% of them have tendency to coronary artery disease or diabetes
So they get forewarned that this is what it is, and you alter their lifestyle and you can actually protect them. So if you see today, the science is such that with the biomolecular sciences, with genetic analysis, with our knowledge of how atherosclerosis happens, our knowledge of how diabetes happens, our knowledge of how cancer, many of the cancers, not all the cancers today, we can actually keep people healthy much longer and live much longer by the science today of predicting what we call the personalized medicine. So you take a person, you take their risk factors, you take their biochemical makeup, you do their genetic analysis, and you can tell them that yes, you have such a higher chance, or and this degree of higher chance of developing this disease. So forewarned means you can take the precaution, and then you can avoid getting into serious trouble. So that's where the science is, and I think that's what people should be pay attention to. And which also COVID proved it, that people who were healthy, who had less comorbidities, did much better than the ones who had comorbidities and had not taken care of themselves, like obesity, all these things. So I think that this is a good moment to reflect that a young man, 50 plus years, who did not know of any major problems with him, had sudden death. Now, there are many, many examples before that. And as doctors, we hear it every day that, healthy person who went to sleep didn't wake up. Now, these are all things because coronary artery disease and high blood pressure are silent killers. You don't know, but it's happening inside you. Okay? मैं हिंदी में जानना चाहूंगी, सेम यही सवाल है। अचानक से सर जिस तरह से हार्ट अटैक हुआ केके को, अचानक से सिम्टम्स का पता चलना, सर किस तरह से प्रिकॉशंस ले, क्या प्रिवेंशन ले, और सर वो कौन सी स्टेज होती है जब पता लगने लगता है कि अचानक से इस तरह की कंडीशन आ सकती है, तो इससे कैसे बचें? तो पहली बात तो प्रिवेंटिव चेकअप से पता लग जाता है आज के दिन। अगर जो आपकी फैमिली में, जिसको हम कहते हैं अपने जीन्स को पहचानिए, अगर जो फैमिली में हार्ट डिजीज है या डायबिटीज है तो आपको होने का डबल चांस है। इसीलिए हम कहते हैं कि जिनकी पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है उनको 25 इयर्स की एज में अपना पूरा चेकअप करा लेना चाहिए, जिससे पता लग जाए कि उनको कितना रिस्क है। दूसरा, नॉर्मल पॉपुलेशन को 30 साल की उम्र तक करवा लेना चाहिए, सो दैट हमारे पास सारे साधन है आज के दिन देखने के लिए कि किस तरफ किसी की लाइफ जा रही है, क्या उनकी बॉडी में है, क्या प्रिवेंट किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जब आपने पूछा कि क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, इसके सिम्टम्स तो जो नॉर्मल एंजाइना होता है, जैसे ब्लॉकेज आ गया आर्टरीज में, जैसे गाड़ी का इंजन पेट्रोल के बगैर नहीं चलता, ये ब्लॉकेज आ जाए तो हार्ट जो ब्लड से चलता है वो उसमें तकलीफ आनी शुरू हो जाती है। तो आप तेज चले, जब डिमांड बढ़ जाती है, ब्लड पूरा नहीं पहुंच रहा, तो चेस्ट पेन होगी। पर डायबिटिक्स को नहीं होगी, और कई लोगों को ये 100% नहीं होता, पर जिनको होती है उनको पता लग जाता है कि मुझे कुछ तकलीफ है। जब वो रुकते हैं तो आहिस्ते आहिस्ते कम हो जाती है। सेम एक्टिविटी रिपीट करोगे तो वैसा ही होने लगता है। तो सबसे ज्यादा डिटेक्शन जो होती है, वो लोग जो सुबह सैर करने जाते हैं वो कहते हैं मैं तो 4 किलोमीटर चल लेता था, अब 1 किलोमीटर पे मेरे को तकलीफ होनी शुरू हुई। तो इमीडिएटली उनका चेकअप करके हम बता सकते हैं कि कोई घबराने की बात है कि नहीं। दूसरा, अगर जो ये चेस्ट पेन रुकने से चली जाती है तो एक चीज है, पर अगर जो ये परसिस्ट करती है, इसका मतलब प्री इन्फार्क्शन एंजाइना कहते हैं, तो वो और भी सीरियस हो गया। और अगर जो आप बहुत स्ट्रेस कर रहे हैं और आपके ब्लॉकेजेस थे तो सडन डेथ हो सकती है। तो इसीलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये समझना है कि रिपीटेड चेस्ट पेन हो रही है, एक कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि हम मसाले वाला खाना बहुत खाते हैं, उसके अंदर जो कुछ एसिडिटी होती है तो लोग समझते हैं कि शायद चेस्ट पेन को कंफ्यूज कर देते हैं। तो अगर जो आपको ऐसा होता है तो एंटासिड लो। एंटासिड के बाद अगर जो ठीक नहीं होता 10 मिनट में, तो आप समझो कि ये हार्ट से हो सकता है। तो इसलिए अपने चेकअप करा लो जल्दी से जल्दी। सीधा जाओ, ईसीजी हो जाएगा किसी भी हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, या पता लग जाएगा कि हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। आजकल तो हमारे पास ब्लड टेस्ट भी हैं जो इमीडिएटली बता देते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। तो इसीलिए ये अगर जो हम अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं
तो अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि मैं यंग हूं मुझे नहीं होगा, क्योंकि हम देखते हैं हिंदुस्तान में जो अमेरिका या विदेशों में होता है, उनमें नॉर्मली हार्ट डिजीज 50 साल की उम्र तक से शुरू होती है। इंडिया में तो 30-35 साल के लोग भी बहुतों को हुआ है। तो इसीलिए ये वार्निंग मैं देना चाहता हूं आज के दिन, क्योंकि जब ऐसा हादसा होता है ये हमारे को जागृत करता है, और ये मेरा मैसेज है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।